Wow, it feels good. It feels great. And you must have got shocked because I'm not like this usually. And really, it feels very good. It happens once a year, and I go bald once a year, especially in wintry weather, because I want to give proper nourishment to my scalp. Scalp, that is the upper skin of your head. आपके हेड की जो ऊपर की स्किन है दैट इज कॉल्ड स्कैल्प वो स्कैल्प कहलाती है so I want to give it proper nourishment. I want to apply oil, and I don't do it when it's hairy, but today I've got bald, and I'm as bald as a cue ball. What I said, I'm as bald as a cue ball. Cue ball का मतलब एक क्यू नॉर्मली यूज की जाती है बिलियर्ड्स खेलने के लिए, गेम ऑफ पूल या स्नूकर्स खेलने के लिए एक क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉल्स आप समझते हैं, ऑल द बॉल्स आर hairless like my head. So I'm as bald as a cue ball. Yes, when you see somebody next time like me, you can say you're as bald as a cue ball. He's as bald as a cue ball. So guys, today we are going to talk about a very important word, that is excuse me. Excuse me. What do you say? Excuse me. Of course, this is the wrong pronunciation, and I don't want you to pronounce like this. Pronounce it properly. This is not the accurate pronunciation of this word. Excuse me. No, not at all. This is excuse me. Excuse me. 21, जैसे आप 21 बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही आप इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे। Excuse me, not excuse me. Excuse me is absolutely wrong. Please don't pronounce it like that. Excuse me. And काफी सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी में इसको बोल देते हैं excuse me, excuse me, excuse me. S जैसे स्कूल, वैसे ही excuse me, but not excuse me. S नहीं बोलेंगे आप, X नहीं बोलेंगे आप. You would say excuse me, excuse me. That is the correct pronunciation. और आप इसको यूज कब करते हैं? When you want somebody's attention. आप चाहते हैं किसी व्यक्ति की attention. आप किसी को डिस्टर्ब करने से पहले एक माफी मांग लेते हैं उससे। एक्सक्यूज का मतलब माफी मांगना, माफ करना, माफ कर दीजिए मुझे। एक्सक्यूज मी, प्लीज गेट असाइड। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू go there. Yeah, when you want to squeeze past some people, you want to squeeze past some people. Squeeze past का मतलब कुछ लोग हैं आपके आसपास, and you are at a crowded place. There is a huge crowd. जैसे कई बार हम लोग ट्रेन में ट्रेवल किया करते थे, तो ट्रेन का जो जनरल कंपार्टमेंट होता है वो नॉर्मली लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है, और अगर किसी को वॉशरूम तक पहुंचना है, टॉयलेट तक पहुंचना है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने लोगों को स्क्वीज पास्ट करना पड़ता है। स्क्वीज पास्ट मतलब आप कुछ अपने बॉडी की हवा निकालते हैं, कुछ दूसरे लोगों को भी आप पुश करने की, स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। So you squeeze past people to reach the bathroom there, to reach the toilet. So when you squeeze past people, you say, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, please get aside, get aside, get aside. So this is the way, this how to use it, and pronounce it well. Don't say excuse me, say excuse me. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.